ठीक अच्छी ठीक अच्छे आई शेयर माय स्क्रीन केमती हमरो हो गला ओके सो बेसिकली हमरो देखो पाइपलाइन रो मीनिंग हमें कोठे में यूज करिवे सपोज फॉर एन एग्जांपल हमरो गोटे रिक्वायरमेंट अछि ओके रिक्वायरमेंट अछि कि मो डाटाटा आछी ओके लेट्स से आई विल राइट इट डाउन somewhere I'll write transform transform sorry Hmm, hmm, hmm. Just a second. Okay. This is what medallion architecture is. Okay. देखो so try to see this ଆମର କଣ ପାଇଁ pipeline ଟା needed actually for application perspective so basically we have two types of data batch data or streaming data ଆମେ process କରିପାରିବା okay batch data means ଆମ data ଟା batch ରେ ଆସୁଛି like you can say that ମାନେ it's not frequent okay one day ରେ ଥରେ ଆସୁଛି କି 5 days ରେ 7 days ରେ ଥରେ ଆସୁଛି data ଟା ଆମେ ତାକୁ load କରୁଛୁ that is called as a batch data streaming data କଣ ହଉଛି ନା it's automatically बट ऑटोमेटिकली आम कौन करूँ ना बेसिकली स्ट्रीमिंग डाटा हूँ कौन माने लाइव डाटा आमर आसूची एंड एवरी टाइम इट इज न्यू डाटा ओके टू टाइप्स ऑफ डाटा वी हैव एंड streaming data अगर प्रोसेस होउची दैट्स फाइन आई विल डिस्कस दैट बट फॉर नाउ विल डिस्कस दैट बैच डाटा सो बैच डाटा अगर आसूची आमे कोन करछे द रिक्वायरमेंट हमर एम्ति रहउची कि हमर जहां भी डाटा आसे सपोज मो डाटा जेसन फॉर्मेट रे आसला कि एक्सएमएल फॉर्मेट रे आसला so I will be storing that data in bronze layer there are three layers in medallion architecture see medallion architecture is a most important interview questions କାହିଁକି ନା ଏଟା ହଉଛି ପଚାରନ୍ତି how you because ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନିଂ ପାଇଁ ତମର ୟୁଜ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡିଜାଇନିଂ ପାଇଁ you should know କି ଆମର bronze layer କଣ silver layer କଣ gold layer କଣ okay so bronze layer is only made for the raw integration basically raw data ଯାହା ବି ଆମର ଯେମିତି ଡାଟା ଅଛି ଯେମିତି ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇ ଡାଟାଟାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଟେବଲରେ ଲୋଡ କରିଦବା that's it ତାର କିଛି ଆମ ମାନେ ସେପାରେଟ ଆମେ ଟାଇପ କାଷ୍ଟିଂ କିଛି କରିବାନି କି ଆମର କିଛି ବି ନଲ୍ ଚେକ୍ କିଛି ବି କରିବାନି ओनली आम डाटा को रीड करबा ब्रोंज लेयर रे राइट कर दबा सो दैट वी कैन कीप ए ट्रैक ऑफ इट ओके देन आमे कोन करबा ना दिस इज इन वन टास्क यू कैन कंसीडर these three are the three different tasks first task will be reading the data and loading into the bronze table second सेकेंड एठी कोन करबो ना सेही ब्रोंज टेबल रु से अगेन ताको फेच कला सिल्वर डाटा कोन करबो ना इट्स फिल्टर करबो जहां भी हमर नेसेसरी फिल्टर्स जहां भी छि करबो क्लीन कराबो हम डाटा टाको नल वैल्यूज एंड एवरीथिंग ऑगमेंटेड होला ताको हमें पाइवटिंग करियार अछि कि ताको हमें आउट न्यू कॉलम क्रिएट करियार अछि ओके जहां भी करियार था वी कैन डू दैट वंस वी डू दैट हमें कोन करछे ना ताको सिल्वर गोटे टेबल रे कैटलॉग हो सिल्वर टेबल रे हमें ताको स्टोर करछे ओके then again in gold layer this is a different task again it is fetching the data and from the silver table and से ताको कोन business level aggregations okay हमें apply करछ maybe एटा window function हे पारे maybe तमरो any kind of aggregation function it can be okay lead lag हे पारे first value anything okay हमें apply करी कि finally ता कहा को दोछ देखो हमर आउटपुट ता कहा को रहउची आइदर पावर बीआई टीम को
or it is to the machine learning team. Okay, so basically this is the meaning of pipeline. Pipeline टा हमें इटा कोन जोटा एग्जाम कहलो कि लाइक ना हमरो डेटा फ्रेम टा काहे यूज करबो ना बिकॉज़ डेटा फ्रेम टा हमरो गोटे लिमिटेड जिंस जोटा कि हमने वोलेटाइल बट आमे एटा सब काम करबो इट्स ऑलवेज जोटा कि हमरो फिक्स्ड माने जेटा गोटे कोन फिजिकल स्टोरेज जो डाटा अछि ता ऊपर काम करबो बट थिंग होची कि लाइक वी आर मेकिंग इट ए स्ट्रक्चराइज्ड वन स्ट्रक्चराइज कला परे कि ब्रोंज कंप्लीट हैला परे ही जाय कि सिल्वर टा स्टार्ट होबो so how we are making it how we can make it happen we cannot use this data frame in silver but we should always use ki once the bronze layer is completed or succeeded then only silver will be loaded or else it will fail ସେଇ type ର ଯେ relationship build କରିବା ପାଇଁ dependency build କରିବା ପାଇଁ we are using this multi hop architecture okay so you can understand এটা হচ্ছে complete ଗୋଟେ ଯୋଉ application ଯେତେବେଳେ ତମେ build କରୁଛ this is a design based on this design you have to do it first तुमको read କରିବାର ଅଛି first step you have to read the data and bronze table ଗୋଟେ create କରିକି underscore bronze ବୋଲି basically ମାନେ କରୁଛନ୍ତି underscore bronze हो କିଛି ବି हो bronze table ବୋଲି ତାକୁ ସେଥିରେ load କରିବାର ଅଛି then again that in silver layer you have to bronze table either you can keep it in bronze table or you can keep it in bronze schema basically you can create a bronze schema and you can keep it right then we are using silver schema taku ame filter କରୁଛେ clean କରୁଛେ କିଛି ଗୋଟେ new column create କରୁଛେ okay all these things we are doing then in gold we are applying the aggregation and final jaha bhi output asla that output is being consumed by either by power BI team or by machine learning team ବୁଝିହେଲା ଏଟା Yes, sir. okay so this is the main purpose why we are creating a pipeline okay this is the basic medallion architecture which is being followed by most of the projects for the data ingestion apart from that एमती नहीं कि एटा फिक्स्ड apart from that भी आउ भी बहुत सारा हमें निजर जो कॉस्मेटिक यूज चेंजेस कर परिबा लाइक हम गोटे जॉब पैरामीटर क्रिएट करिबा और अब किछि भी सेटअप कर परिबा ओके दैट्स नॉट एन इशू Sir, आर्किटेक्चर तो बुझिला बट पाइपलाइन रो कोड एक काम आडा माने केमती हैला से हाँ पाइपलाइन देखो पाइपलाइन रे केमिति काम आसे कि तमे फास्ट ब्रोंज लेयर टाको लोड करछ यू माइट बी थिंकिंग लाइक मो सब जाक कोड को गोटे नोटबुक रे लिखि ताको एग्जीक्यूट कर देबी व्हाट इज द नीड ऑफ पाइपलाइन ओके बट द थिंग इज जेतेबेले तमे सपोज तमे चाहूछ कि मोर देखो डिबगिंग पर्पस रे सपोज हम डाटाटा लोड हैला ओके डाटाटा लोड हे गेला बट प्रॉब्लम होची कि सेटा ब्रोंज रे तमरो करेक्ट डाटा आसीनी ओके डाटाटा तमर लोड हे गेला फाइनली सब जाक लोड हे गेला तमे ताको डिबग केमति करिवो फॉर डिबगिंग पर्पस ପାଇଁ इट इज दिस डिजाइन वर्क्स माने एटा तुमको फील दबो कि यस मोर डाटाटा फेल हिची ब्रोंज रे बिकॉज़ एटा डिपेंडेंट सब ना गोटे फेल हेले सब जाक फेल माने फेल तो हबनी एग्जीक्यूट हबनी so that you can get to know कि मोर डाटा लोडिंग रे फेल हिची सपोज मोर नाइ डाटा लोडिंग हे गेला मोर एई टास्क रे फेल हिची so that I can get to know कि मोर पाइपलाइन टा कोड फेल हला so the meaning is तमे गोटे नोटबुक रे सब किछि कर परिबो ओके बट सेटा तमरो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में गोटे स्ट्रक्चर तमे मेंटेन करूनो ओके you are simply running the data and loading that's it okay so सेई जिंसटा को तमे अवॉइड करिया पई you are creating a separate task having separate task is connected to each other okay this is the depend this silver is dependent on bronze gold is dependent on silver okay and एथरे पाइपलाइन रो मीनिंग होची कि ए ब्रोंज रे जहां भी आउटपुट आसिला ताको तमे गोटे टेबल रे स्टोर करूचो ताकू तमे सिल्वर रे यूज करूचो दैट इज द मीनिंग ऑफ पाइपलाइन दी जिंस होला इट आइदर इटा कंप्लीट हैला पर सिल्वर रन होची दैट इज आल्सो वन मीनिंग आउट मीनिंग होची तार ब्रोंज रे आउटपुट जहां भी हैला तमे ताकू कंज्यूम करछो सिल्वर रे सो आउटपुट टा काहे कि तमे टेबल रे रखुचो बिकॉज़ सपोज किछि इशू आसिला ओके यू हैव टू डिबग इट तमे पुणी थोर एग्जीक्यूट करियो फास्ट रु ओके थिंक अबाउट माने डिबगिंग पर्सपेक्टिव माने एरर तमरो सबुठी आसीबो इट्स नॉट लाइक किछि भी तमरो एरर फ्री नाही ओके एरर सबुथिरे आसीबो बट ताकू केते फास्ट तमे ताकू रिजॉल्व करि परिबो यू हैव टू डिजाइन दैट वे इन ए दैट मैनर सेही मैनर रे तमे ताकू डिजाइन करले ही यू विल गेट टू नो कि हाउ कैन आई डिबग माय एरर एंड हाउ कैन आई रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल सो सेही पर्सपेक्टिव रे दिस इज द बेस्ट डिजाइन जोटा कि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस फॉलो करछन्ती ओके स्टिल डाउट्स अछि ना बुझियला एटा
No, sir, got it. ओके समस्त এটা বুঝি পারলো দিস ইজ द ডিজাইন মানে ডেটা ইনজেকশন ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛେ ମେ ବି ଡେଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରୋସେସ ଆଣ୍ଡ ଡେଟା ଇନଜେକସନ କରୁଛେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୁ ଓକେ वी आर फॉलोइंग दिस डिजाइन आर्किटेक्चर बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ आर्किटेक्चर so the name of the architecture is medallion architecture or someone called it as a multi hop architecture okay so directly interviewer they will ask you what is medallion architecture databricks mane it is you are following medallion architecture so you have to tell them okay so you have to tell them like we are whenever we are reading some data we are trying to reading the data from the source it may be a batch data or maybe a streaming data so you are following this medallion architecture here we have three layers in bronze layer we are simply reading the raw data amar jahar jo format re thibo json ରେ ଥିବ ଯୋଉ format ରେ ଯେମିତି ବି ଥିବ it will be loaded into the table that is the concept of raw data no filter nothing so that suppose ତମେ ତ ଯାଇକି ଦେଖ ତମେ ସବୁବେଳେ ଫାଇଲ ରେ କାମ କରୁଛ ଓକେ so you know the coding so ତମକୁ ଏମିତି ଆଜି ନାଇଁ କି ଆଜି ଯଦି ଫାଇଲ ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତମେ ଯାଇକି କହିବନି କି ନାଇଁ ମୋର I'll be checking the data in the file only because you have the table so you can go and directly check in the bronze layer that's it okay then we have silver layer then we have gold layer okay so everyone understood this part ନା କାହାର doubts ଅଛି Yes, sir. okay fine so এটা actually ଆଗକୁ କହିଥାନ୍ତି ଏବେ କହିଦେଲି because it's needed okay now go back to the states where ଆମେ workflow କରୁଥିଲେ right workflow କରୁଥିଲେ then ETL pipelines okay ଠିକ ଅଛି I'll just check about this workflows workflows କୁଆଡେ ଗଲା ଆମର job and pipelines this is the job I created yesterday okay so basically we'll discuss that now what will I do ये जो task अच्छी okay basically हमें discuss करते task parameter okay but now what will I do I'll simply remove this one control X कर देली okay I'll just remove this one also I'll from remove this one okay then I'll do one thing I'll just put a job parameter basically this parameter is common to all okay so basically it is telling add job level parameter that is automatically pushed down to the task okay so whenever ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବ କି ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ parameters ଟା across all the task ରେ use ହଉଛି then you don't have to create the task or create the this parameters separately you can create a single job parameter and that can be used across all the okay it can be used across all the tasks right ବୁଝିହେଲା ଏଟା Yes, sir. ओके जॉब पैरामीटर टास्क किसी डिफरेंस नहीं सेम जिंस बट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सिंगल पैरामीटर्स इन ईच ऑफ द टास्क हम रिपीटेटिव टास्क करछे ना को जोडे भूली जाय सपोज एटा सिना दीटा अछि एमती एमती मु देखि छी बहुत 20 20 30 40 टा एमती भी टास्क गोटे ऊपर डिपेंडेंट अछि ओके
সেটা পাইপলাইন রে চালছি সো ইট উইল টেক এ লট অফ টাইম I mean লট অফ টাইম তো হবନି ବଟ୍ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଇଟ୍ସ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଓକେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ କଣ ହେଇଥିବ ସବୁ ଯାକ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଇଟ୍ସ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଯଦି ଓନଲି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 5 ଅଛି ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ but if it is more than that then you have to set the job parameter directly and it can be used okay এটা ରନ୍ ହଉଛି ରାଇଟ୍ ହଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟିକେ ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ମୋର ରନ୍ ପାରାମିଟର ରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାଟଲଗ ନେମ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ରେ ଆସୁନଥିଲା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟାସ୍କ ଲେଭେଲ ରେ ଦେଇଥିଲି ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଜବ୍ ଲେଭେଲ ଓକେ ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚାରନ୍ତି ଲାଇକ୍ ହାଉ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମନିଟର ୟୁର ଜବ୍ ଓକେ ତମେ ଏଟାକୁ ମନିଟର କେମିତି କରିବ so you can say that directly ମୁଁ spark ui ରେ ଯାଇକି job pipelines ରେ ଯାଇକି I can monitor it so I'll go here and I'll check like it's running and ଯଦି ବି deep level ରେ check କରିବାର ଅଛି I can click over here ମୁଁ ଏଟା click କରିଦେବି click କଲା ପରେ ମତେ output ଦେଖେଇବ କି status of the each task okay or else you can say that ki we can test it from the db utils okay जोटा कि तमे manual माने कोन कोड लेवल रे status टा चेक करियो ताकू each task रो okay you can get this job id you can get this run id okay and you can check there are two ways mostly interviewer mane tike test kariya pe pacharandi ki either you can check manually like mane ui ru check kari paribo or je tame chahibo bi code ru check kariya pe using db utils you can check it okay so basically hmm okay db utils job task status either ତମେ REST API यूज कर परिबो okay here is the thing okay so basically databricks you can use data db utils jobs dot task status command to check the status of the job and its task okay put on to note db not job dots is not a standard command database to typically use REST API okay so basically ଏଇଟା କହୁଛି କି ଆମର either ତମେ ସେଟା ୟୁଜ କରିପାରିବ ନହେଲେ ତମକୁ ଏଟା REST API ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ okay API this get API ତମକୁ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ sometimes like କିଛି ଗୋଟେ ହାୟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରେ ହୁଏ ସେମାନେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି like how can you fetch that one କେମିତି ମନିଟରିଂ ବେସିକାଲି ତମର ହଉଛି ନା କେମିତି ମନିଟର କରିବ that's it okay ମାନେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜବ ଚାଲିଛି ତମେ କେମିତି ତାକୁ ମନିଟର କରିବ and ତାକୁ କେମିତି କନଫିଗର କରିବ because manually there must be someone who will be monitoring that okay so you can do it manually or else also you can do it through the coding as well okay so এটা তো ଗୋଟେ ଚାଲିଛି let it run I will discuss other things. Okay. Basically tags भी तमे add करि परिबो whenever you need माने basically तम job tag wise तमे कोन ताको filter करि परिबो job को सेति पे tag use करंती description use करंती what is this I mean what is this job is all about এটা success हे गला okay it okay fine এটা success हे गला okay so this is fine then you can configure git actually okay so basically ତମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି git url ଟା ଗୋଟେ create କରିକି git reference branch commit ଏଟା ସବୁକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ basically okay then schedule trigger କାଲି କହିଥିଲି and job parameter job notification so job notification is this is used whenever your job is success or job is failed ଯେତେବେଳେ job जो success ହେଇଗଲା then you will be get notification job ଯଦି error ହେଲା you will also get the notification okay so that is what you have to use this one job notification suppose ମୁଁ ଏଠି ଯଦି click କରିବି job notification add notification so I'll be getting what is the destination you can select email address
then you have to write your email address. Okay, you can write your email address here. Then you have to click it and you have to write it, save it. Okay, so that, and supported destination is either it can be email, Microsoft Teams, PagerDuty, Slack, webhook integration. Okay, this kind of supported destination किसी भी यदि है बेसिकली प्रोजेक्ट रे कौन हुए कि मोस्टली यू हैव टू सेंड दिस ईमेल अलर्ट टू द मैनेजर्स और कस्टमर, so that you need to figure it out like को मेल दबार अछि कौन अछि, so you need mail id, that's it. Okay, सर then metrics threshold, हाँ हाँ। ଏଇଠି ଯୋଉ ମେଲ ଆଇଡି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ମେଲ ଆଇଡି ରେ କଣ ଆସିବ ସାର୍ ମାନେ କଣ ଯିବ ମେଲ ରେ ତାର ଫେଲୁଅର ହେଲା ଯେ ଯଦି ଏଟା ଯଦି ଫେଲ ହେଇଗଲା ଏଠି ଅପସନ୍ସ ଅଛି ନା, କୋଉଟା ଗଲା ଆମର ମେଲ ଆଇଡି ଜବ ନୋଟିଫିକେସନ। ଓକେ, ସି ଏଠି କଣ ଅଛି ଆମର, ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ମେଲ ଆସିବ, ସକ୍ସେସ ହେଲେ ମେଲ ଆସିବ, ଫେଲ ହେଲେ ମେଲ ଆସିବ, ଡ୍ୟୁରେସନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ନାଇଁ ମୋ ଜବ ଟା କାହିଁକି ଲଙ୍ଗ ରନିଂ ଚାଲିଛି, ତମ ଜବ ଟା 15 ମିନିଟ ଚାଲିବା କଥା 30 ମିନିଟ୍ସ ହେଇଗଲା, ତମେ ସେଟ୍ କରିବ କି ଜବ ଟାଇମିଂ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ମୋର ଦେନ୍ 30 ମିନିଟ୍ସ, ସେଟା ଅଧିକା ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଦିସ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବ୍ୟାକଲଗ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ହେଲାନି, ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍। ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମିତି ନାହିଁ କି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଥିବ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ମନିଟର କରୁଥିବ କି ଜବ ଚାଲିଲା କି ଚାଲିଲାନି, ବିକଜ ସାର୍ ବହୁତ ସାରା ଜବ ଚାଲିଛି ନା, ବଟ୍ ଓନଲି ତମେ ନୋଟିଫିକେସନ ତ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରୁଥିବ, ବେସିକାଲି ତମେ ନୋଟିଫାଏ ହେଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଆଲର୍ଟ, ଅର ଏଲ୍ସ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ଡାଟାବେକ୍ସ ଟା ଓପନ କରିକି ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ମୋ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଓକେ, ବଟ୍ ତମେ ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଲ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଟୁ नो ହଁ my job is running or starting, success, failure, all these things, ସେଥିପାଇଁ job notification is very very important. ଓକେ, ସାର୍ ନହେଲେ ତମେ ଚେକ୍ କେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କରିବ? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅନ୍ ଆଭରେଜ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସାର୍ ଗୋଟେ ଜବ ରନ୍ ହେବା ପାଇଁ? डिपेंड करे ना तमरो वॉल्यूम केते, डाटा रो कॉम्प्लेक्सिटी केते, प्रोजेक्ट रे को लेवल रो कॉम्प्लेक्सिटी यूज होची। ओके, केतेटा प्रोसेस तमे यूज करछो, सिंपल प्रोसेस और तमे मल्टीपल प्रोसेस, तो डिपेंड करे टाइम ऊपर, एमती फिक्स किछि नथे। ओके, एंड ऑन एन एवरेज तो गोटे कॉम्प्लेक्स जंप पे डेफिनेटली तमरो 2 to 20 मिनिट्स लागिवो। ओके, दैट इज द मिनिमम। ओके सर। ओके, तो से जिंस गुडा को माने दरकार एटा काहे कि जेहेतु तमे गोटा कीप ए ट्रैक ऑफ इट मोस्टली, कहीं तमें जहाँ काम कर नोबडी नोज ना, यदि काली किसी फेल्योर्स है किसी भी है माने क्लाइंट कहबे कि नो आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, सो बेसिकली तमें यदि जो माने एटा सेटअप करिवो जॉब नोटिफिकेशन, सो दैट यू कैन ओके यू आर वर्किंग ऑन दिस एरर पार्ट और यू आर वर्किंग ऑन दिस माने ये जो फेल्योर अच्छी कि किसी भी अच्छी यू आर वर्किंग ऑन दैट। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। एंड देन ऐड मैट्रिक्स थ्रेशोल्ड बेसिकली, सो बेसिकली मैट्रिक्स थ्रेशोल्ड माने आमे जदी कहू कि बैकलॉग बाइट्स माने रन ड्यूरेशन जदी अधिक हे गला, ओके मु कहबी कि नै मोर लॉन्ग रनिंग जॉब टा गोटे रन चलची। ओके, आई कैन ऐड इट लाइक मोर ड्यूरेशन टा एटा मोर देन 30 मिनिट्स हबा कथा नुहे, मैक्स टू मैक्स इट विल टेक 30 मिनिट्स। सो देन से कौन करिवो ना डायरेक्टली 30 मिनिट्स परे से गोटे तुमको अलर्ट सेट करिवो। ओके, एटा गोटे सेट दैट एडिट नोटिफिकेशन, तो से गोटे एटा गोटे वार्निंग थ्रेशोल्ड बेसिकली एंड टाइम आउट थ्रेशोल्ड। वार्निंग माने से गोटे 30 मिनिट्स पर वार्निंग दबो, देन तमे कहबे कि ना आउ 5 मिनिट्स मु ऐड कर देबी, सो दैट टाइम आउट हे जियो माने जॉब टा स्टॉप हे जियो सेठी। नल तो लॉन्ग रनिंग रे पड़ला ना, लॉन्ग रनिंग जॉब टा ही हमर बहुत प्रॉब्लम करे, जोटा कि सेटा तो निजे तो एग्जीक्यूट हुए नी, बट अलगा प्रोसेस को भी स्टॉप कर दिए माने स्लो डाउन कर दिए। ओके, दिस इज आल्सो यू कैन सेट अप रन ड्यूरेशन हे गला, तमे कहबो कि नाइ मु अलगा जिंस अछि सर स्ट्रीमिंग बैकलॉग। हाँ, टाइमर थ्रेशोल्ड रे जदी हमें 5 मिनिट्स दे देथिबो देन 5 मिनिट्स पर से जदी टास्क जदी कंप्लीट होनी 5 मिनिट्स भीतर देन से 5 मिनिट्स पर सेटा कैंसिल कर दबो जॉब को कोड पॉज टाइमर कर। टा ए जोटा को जो ट्रिगर टा एटा। ट्रिगर्ड नहीं सर एबे जो देखो चले एडिट पैरामीटर हाँ ये हाँ हाँ हाँ, ड्यूरेशन मेट्रिक थ्रेशोल्ड टा हाँ एटा मैट्रिक तमरो थ्रेशोल्ड 5 मिनिट्स। ओके, टाइम नॉट थ्रेशोल्ड हाँ सर यस यस, लास्ट ओके, ड्यूरेशन टा इट शुड बी थ्रेशोल्ड गोटे होची माने वार्निंग तुमको मिलिबो। ओके, वार्निंग टाइप रो कि प्लीज लुक इनटू द जॉब इट इज रनिंग सिंस लॉन्ग लाइक दैट, ए टाइप रो गोटे मेल आसीबो। देन तापर आ गोटे कोन करियो तुम सेटअप जो टाइम रे करथिबो जॉब टा स्टार्ट हैला, आ जॉब टा स्टार्ट रो करंट टाइम 30 माने सपोज 30 मिनिट्स की 45 मिनिट्स हम सेट करछो। ओके, देन इफ इट डिड नॉट कंप्लीट और सक्सेस किछि भी फेल्योर किछि न होला, देन इट विल स्टॉप, इट विल टाइम आउट होइजो। ओके, एंड दिस इज गुड एक्चुअली बिकॉज अननेसेसरी तमे सपोज तमे तो सब माने 24/7 तो नाउ ना,
ତମେ 9 hours ଜବ୍ କରୁଛ, 9 hours ପରେ ଯଦି ତମର ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ଆସିଲା, ଓକେ, ଦେନ୍ ତମେ କଣ କରିପାରିବ? ତମର ଅନନେସେସରି ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ ଅଫ 15 hours ରହୁଛି, ସେ 15 hours ଯାକ ତମର ଜବ୍ ଟା ଅନନେସେସରି ରନ୍ ହେଲା, କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଫ୍ ହେଲା, ଦେନ୍ ତମେ ଅନନେସେସରି ମାନେ କଣ, ମାନେ ତମର ଚାର୍ଜେସ୍ ଯାହା ବି ହେଲା ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ପେ। ତାଠୁ ବେଟର କି ତମେ ଟାଇମ ଆଉଟ୍ କରିଦିଅ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିଏଲି ହେଲ୍ପଫୁଲ। ଓକେ ସାର୍, ଗଟ୍ ଇଟ୍। ଓକେ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମର ରହିଗଲା ପରମିଶନ। ସପୋଜ ତମେ ଯଦି ନୋଟବୁକ୍, ତମର ନୋଟବୁକ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ଅଦର ପର୍ସନ, ଓକେ, ତମେ ଚାହିଁବା କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସେସ୍ ଦବା ପାଇଁ, ଓକେ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ବଟ୍ ଏଇଟା ବେସିକାଲି କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ୟୁଜର କୁ ଦେବାକୁ, ମାନେ ଯଦି ସେମ୍ ବେସିକାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଅଣ୍ଡର ଏ ସେମ୍ ୱାର୍କ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆଡମିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟାସ୍କ ଗୁଡାକ, ଓକେ, ମାନେ ମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାର୍କ ସ୍ପେସ୍, ମାନେ ତମେ ସପୋଜ ତମେ ସବୁ ଯାକ ତମେ ସମସ୍ତେ 28 ମାନେ 26 ପିଲା ଅଛ, ରାଇଟ୍, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ସ୍ପେସ୍ ରେ କାମ କରୁଛ, ରାଇଟ୍, ସପୋଜ ତମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ସ୍ପେସ୍ ରେ କାମ କରୁଛ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଇଡି ଯୋଉ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ୟୁ ହାଭ୍ ଦ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଦ ୱାର୍କ ସ୍ପେସ୍। ସେ କେସେସ୍ ରେ କଣ ହବ ନା ଏଠି ସବୁ ଯାକ ମେଲ୍ ଆଇଡି ଶୋ କରିବ, ଓକେ, ସୋ ଏଟା ମୁଁ ଯାହା ବି ଟାଇପ କରିଦେବି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଶୋ କରିବ ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଡ୍ ହିମ୍ ଆଜ ଅ ଲାଇକ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନେଜ ଇଟ୍, ଓକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ୟୁଜ ହଉଛି ବେସିକାଲି ୟୁ ନିଡ୍ ସମ୍ ଲାଇକ୍ नो ଲେଭେଲ ଆକ୍ସେସ୍ ଆମକୁ ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଠି ୱାର୍କ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ୱାର୍କ ସ୍ପେସ୍ କୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା ଦରକାର। ସୋ ବେସିକାଲି ୟୁଜର ରେ ଯାଇକି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡ୍ ଦେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ, ଓକେ। So for now, just ignore that. It is basically admin task. Mane that is not related to data engineering. It is basically access related thing. Okay. Admin team they are setting up everything and they are assigning you the access. Basically କଣ ହବ ନା ମାନେ ଏଟା ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଓକେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ତମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଡିଟ୍ ପରମିଶନ କରିକି ଯୋଉ ମେଲ୍ ଆଇଡି ଟା ମାଗିବ ଯାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ଇଟ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତମକୁ ଶୋ କରିବ, ଯେହେତୁ ହି ଇଜ ଅଲସୋ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦିସ୍ ୱାର୍କ ସ୍ପେସ୍, ଓକେ। ତ ଏଇଟା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଏଠି ଯେହେତୁ ତମେ ମାନେ କଣ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ ଟା ୟୁଜ କରୁଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଶୋଇଂ। ତାପରେ ଓକେ, ସୋ ବେସିକାଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କନକରେଣ୍ଟ ରନ୍, ସୋ ବେସିକାଲି ଆମେ କହିବା କି ଆମେ ଯୋଉ ଜବ୍ ତମର ରନ୍ ହଉଛି କେତେଟା ଜନ୍ ତମେ କନକରେଣ୍ଟଲି ରନ୍ କରିପାରିବ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 5 ରନ୍, 5 ଜବ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରନ୍। ବେସିକାଲି ଆମର ଏଟା ଲିମିଟ୍ ଅଛି ଏଠି, disabling queuing means new runs will fail once that limit is reached. So workspace is limited 5 active runs, okay. So here also you can set up, okay, you can any number of job you can set up, that's not an issue. So these are the amaro jemti rahila ki amaro job level thing, okay, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା କିଛି ବି କରିବା you can get it, and task level ରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, କାଲି ତ କହିଥିଲି, देखो कंप्यूटर ऑटो स्केलिंग टा ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाए, ओके, डिपेंडेंसी पैरामीटर्स तो ठीक होइछि, नोटिफिकेशन रिट्राइज, ओके, सो रिट्राइज आल्सो कोन हमें रिट्राई गोटे सेटअप करिया पड़ो, सपोज किछि नेटवर्क फेलियर हे गला, ओके, एंड यू वांट टू माने ताकू सेटा रिट्राई करिया ट्राई करछो, देन यू कैन सेटअप कि मोटा मैक्सिमम 3 टाइम्स रिट्राई करबो, देन और एल्स इट विल फेल, ओके। रिट्राई माने बेसिकली कोन पे होउछु, सपोज हम नेटवर्क फेलियर हो किछि भी क्लस्टर इश्यू हो किछि पई हमरो जॉब टा प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हेनी, ओके, सो इन दैट केस यू हैव टू ऐड दिस रिट्राई ऑप्शन, ओके। यस सर। ठीक अछि, आउ कोन डाउट्स अछि, बिकॉज़ आई डिस्कस्ड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दिस जॉब, वर्कफ्लो टा केमती क्रिएट करबो, वर्कफ्लो रो कंपोनेंट्स एंड एवरीथिंग, सो तमे ट्राई करो 3-4 थर एटा को प्रैक्टिस करिया पई, ओके। 4-5टा नोटबुक क्रिएट करो, बेसिक नोटबुक जहाँ भी तुम पाइथन में पढ़ी आज जाए क्रिएट करो, ताको ट्राई करो, ताको यूज करिया पे, ओके, सो दैट तुम प्रैक्टिस रहइबो कि हां, और एल्स तुम गोटे द कॉम्प्लेक्स जिंस को टिके जीवो तो यू कैन यूज लाइक टेक ए फाइल, ओके, गोटे माने
task ଅଛି, you can create your own also, like what you can do. Okay, for practice purpose এই টাইপ ର କର। କାଲି ତ କଣ କରିଥିଲ, ଟେବୁଲ ଲେଭେଲରେ କରିଥିଲ ବେସିକାଲି। ଓକେ, ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଥିଲା ଟେବୁଲ ଲେଭେଲରେ କରିଥିଲ। ନାଉ what you can do, you can simply take a file, okay, take a file in volume, volume ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। okay, 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 use volume path as parameter। okay, ଏଟା ୟୁଜ କଲ, ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ତାକୁ ୟୁଜ କରିକି load into bronze table ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଏବେ। ଓକେ, ତାପରେ କଣ କରିବ ନା load into silver from bronze। ଓକେ, ତାପରେ load into gold from silver। ଓକେ, ସो ବେସିକାଲି ତମେ କଣ କରିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଥ ନେଇଯିବ। ତମେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ନେଲ, ଫାଇଲ କୁ ତମକୁ ଲୋଡ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, you can take ଆମର ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯାହା ବି ଏକ୍ସାମ୍ପल्स ଆମେ କରିଛେ ଫାଇଲ ଲେଭେଲରେ, you can take either of any example, ତାକୁ ଅପଲୋଡ କରିଦବ। ବଟ୍ ତମକୁ ଭଲ୍ୟୁମ ପାଥଟାକୁ ପାରାମିଟର ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ବିକଜ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ नो କି ଆଇଦର ଭଲ୍ୟୁମ ପାଥ ବନେଇ ପାରିବ ଅର ଏଲ୍ସ ତମେ କଣ ମାନେ ଭଲ୍ୟୁମ ର ପାଥ କୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିଦବ, ଫାଇଲ ନେମ୍ ଟାକୁ ପାରାମିଟରାଇଜ କରିଦବ। ओके, आइदर ऑप्शन यू कैन डू। बेसिकली पैरामीटर टा टेस्ट करबे जोटा रियल टाइम रे पैरामीटर हम यूज करछु, दैट यू शुड यूज। ओके, ताको यूज करबो, यूज करिक कोन हबो ना फर्स्ट तमे ब्रोंज टेब गोटे नोटबुक क्रिएट करबो। एटा होची सेपरेट नोटबुक, एटा गोटे ब्रोंज टेबल ले रीड कलो, रीड करिकी ताको डायरेक्टली जहां भी रीड कलो ताको राइट कर दो, दैट इज ब्रोंज टेबल। सिल्वर रे कोन करबो ना ताको जहां भी ट्रांसफॉर्मेशन करबो, ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लीनिंग। ओके, तापरे कौन करिवो ना तमे गोल्ड लेयर रे कौन करिवो ना किछि एग्रीगेशन, एग्रीगेशन हे गला और मर्ज हे गला, जहां भी तुम मर्ज करिया କଥା एग्रीगेशन को जहां भी करिया तमे करिवो। ओके, फाइनली तमे डाटा टाको पॉपुलेट करिवो। दिस आल्सो यू कैन प्रैक्टिस, जोटा कि तमरो फाइल आ बिकॉज़ मोस्टली दिस काइंड ऑफ डाटा तमे पाइबो माने जोटा कि तमरो यूज होची बिकॉज़ आइदर तमे हां कैटलॉग तमे काल जोटा करले सेटा भी तमे पाइबो एंड फाइल लेवल भी तमे भी एई टाइप रो भी यूज केस जोटा कि तम रियल टाइम रे मिलिबो। तो एटा को तुम सेटअप करो, सेटअप करके ट्राई करो। ओके, एनी फाइल यू कैन टेक जोटा कि फ्लाइट डाटा मूव करथिली, दैट आल्सो यू कैन टेक, दैट्स अ वेरी गुड डाटा। ओके, सो दैट तुम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर परिबो। तबे सेटा गोटे नोटबुक रे लिखुतलो, एबे तीनटा को नोटबुक लिखिबो एंड तीनटा को नोटबुक को सेपरेट सेपरेट टास्क क्रिएट करिवो एंड गोटे कंप्लीट गोटे एप्लीकेशन टाइप रो तुमको लागिवो कि हां आई हैव डन समथिंग। ओके, सो दैट कोन करिवो ना तुमको माने किछि भी गोटे प्रॉब्लम छ जेंति तुम कहला कैटलॉग तले डीबी यूटिल्स यूज करछि, कैटलॉग नेम ता जटा दउछु हमरे टेक्स्ट रे सेटा होछि पैरामीटर नेम सहित सेम रहते दरकार। तो सेई जिंस गुडा को ऑल दिस थिंग्स इट कैन बी हैंडल्ड, माने एटा तमरो डाउट ता क्लियर हो जेबे कि हां व्हाट इज दिस। ओके, सो एटा तुम प्रैक्टिस करो। दिस इज कंप्लीटली अ फुल एंड टू एंड टास्क, जोटा कि कहया गेले एंड टू एंड तुम मतलब गोटे प्रोजेक्ट करूछो, दिस इज बीइंग यूज्ड। बुझियला एटा टास्क यस सर। टा, एटा तुम प्रैक्टिस करो। ओके, टेबल लेवल सरला, एबे तुम फाइल लेवल करो, फाइल टाको अपलोड करिकी फाइनली हो। एंड हाँ आ गोटे जिनस, ओके, सेपरेट नोटबुक। ओके, क्रिएट टेबल एज ब्रोंज। ओके, सेमती तुम एठी कोन एटा सिल्वर टेबल। ओके, ओके, एटी होची हमर गोल्ड टेबल, गोल्ड टेबल। ओके, एनीथिंग ठीक अछि। एंड ट्राई करो जहाँ भी मु डिस्कस करी जॉब रे, ट्राई करो सेटा सब सेटअप करिया पे। ओके, जोटा भी नीडेड, जोटा दरकार नहीं दैट इज फाइन, बट मोस्टली जोटा को दरकार अछि हमें जेमती जॉब पैरामीटर सेट करिवो। ओके, दिस थिंग्स तमे सेट अप कर परिबो कि जॉब पैरामीटर। ओके, इंस्टेड ऑफ गोटे प्रैक्टिस सब रखो जॉब पैरामीटर करिया पे इंस्टेड ऑफ टास्क। टास्क रे कोन होची ना माने जोटा कि माने कोन प्रैक्टिस रहि गेलो टास्क रे तमे एटा भूली जिवो। ओके,
So try to keep it as a job parameter and use it. ठीक अच्छे एटा हला पिंग कर दो मैं ग्रुप रे so that you can take a look practice करो जहाँ भी हला कल हमें डिस्कस करिए ओके तेना वर्कफ्लो मेन जिनस होची पाइपलाइन क्रिएशन ओके पाइपलाइन क्रिएशन तमरो माने गोटे माने गोटे एप्लिकेशन रे टू टाइप्स थांती 2 to 3 टाइप्स जने तो एडमिन टीम रही गला से तुमको सब एक्सेस लेवल्स ऑल दिस जेडा सब मेंटेन करिवे देन डेवलपर वन डेवलपर डेवलपिंग करियो ऑल दिस थिंग देन वन इज फॉर डिप्लॉयमेंट ओके सो डिप्लॉयमेंट जे करिवो सो बेसिकली ही इज नॉट फुल्ली ऑन द डिप्लॉयमेंट बेसिकली तमटो से डाटा नहीं कि डिप्लॉय करिवो ओके सो यू शुड नो कि मते कॉन्फ़िगर केमती करे अछि कोन अछि सो यू हैव टू नो बेसिकली अरे बेसिकली समस्त एक्सपेक्ट करन जॉब रे एवरीवन एक्सपेक्ट कि गोटे पिला सब जानता ओके he should know the admin part, he should know the development part, he should know the operations part, okay, that is the basic requirement and expectations for each company, okay, सब project रे सेरा expectation था but that is fine but my thinking is सब बेले तने कोन करो development जिनसटा best जानि था all these things you can know the overview जोटा भी अछि basic जिंस मोर केमती करे अछि कोन करे अछि then you can improvise okay it's not like कि तमे सब जाक सिखा impossible okay let them tell like जे भी इंटरव्यूअर कहउचंती कि जहाँ भी जॉब डिस्क्रिप्शन आसुची ओके मैं भी तमे जॉब डिस्क्रिप्शन देखुथिबो सब बहुत सारा एते सारा लिखा है जॉब डिस्क्रिप्शन ओके व्हिच इज practically not possible they are writing because of like some requirements and set up everything okay and से अनुसार पिला भी बने दउचंती माने जोडा सीवी रे बहुत सारा जिंस ऐड कर दउचंती व्हिच इज कंप्लीटली अननेसेसरी काहेना जदी तमरो से जिंस अननेसेसरी जिंस तमे ऐड करिछो एंड दैट इज बीइंग कैप्चर्ड बेसिकली तुम नोटिस करदेला किए जन इंटरव्यूअर देन यू विल बी इन ट्रबल ओके जेतेबेले सीवी जेतेबेले बनैबो हमें ओके सबल ट्राई करबो कि जोटा जानिछ सपोज एबे जहाँ भी हम पढ़ाई डाटा इंजीनियरिंग सो यू कैन कीप इट लाइक पाइथन लिखिलो पाइस्पार्क लिखिलो एसक्यूएल लिखिलो ओके डेटाब्रिक्स लिखिलो 4 थिंग्स फाइन ओके आउ किछि दरकार नै एटा होछि हमर स्किल सेट्स टेक्नोलोजी तुम यूज कर चार्टा देन तुम लिखिपार कि मैंने डाटा इंजीनियरिंग यूज कर डाटा एनालिस्ट कि डाटा इंजेक्शन कर पाइपलाइन क्रिएशन ओके वर्कफ्लो क्रिएशन देन ऑल दिस थिंग्स तुम एटा मेंशन कर परिबो इट इज काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन ओके एटा होछि वर्क रे तुम जीवो कोन काम करछो कोन करछो एटा सब ओके गिटहब भी तुम ऐड करि परिबो गिटहब टा मु कहबी केमती कनेक्ट कर यू कैन डू दैट बट अननेसेसरी थिंग जो बहुत सारा जिंस अछि तुम लिखि देबो जब जॉब डिस्क्रिप्शन खोजी की तो you will be in trouble इंटरव्यू रे तमे ही ट्रबल प्रॉब्लम हो काहेगा जेहेतु एक्सपीरियंस भी मैटर करे जे 10-15 वर्ष एक्सपीरियंस हेतिबो ही कैन राइट इट बहुत सारा जिंस बिकॉज़ ही हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस बट यू आर फ्रेशर तो बेसिकली जति की जानिछ सेति की लिखिबो नॉट मच अधिका नहीं कम नहीं बट हां जोटा प्रोजेक्ट जहाँ भी लिखुछ दैट शुड बी इन एलाबोरेटेड वे ओके सो से जिंस गुडा एक्चुअली दरकार एठी नॉट कि सब जगह जिंस कैन आई हैव सीन लाइक लाइक मोस्टली जतिके सब सीवीज अछि रिज्यूमेज अछि माने बहुत सारा जिंस लिखि दियंती ओके एडब्ल्यूएस सब माने समवन आई हैव सीन लाइक से लिखि दी सब जगह तीनटा को मु क्लाउड जानिछि ओके सो हाउ कैन लाइक फ्रेशर तीनटा को क्लाउड केमति जानि so that is not possible always try to ମାନେ ଗୋଟେ ବି cloud लिखिथिबो सबले बेस्ट सबुठु and you can mention that कि हां मु AWS रे बेस्ट अछि you can tell that yes I know somewhat components of Azure and some components of the GCP that you can mention but you cannot say that you are pro okay fine এটা তো বহুত হয়ে গেল ডিসকাশন দেন schedule trigger হয়ে গেল run now okay so there are other options like you can simply if you want to clone a job also you can clone job suppose mu kahibi ki nai mate ଆଉ ଗୋଟେ job create କରିବାର ଅଛି okay so you can simply clone the job same ଜିନିଷ ତମେ clone କରିଦେଲ ତାକୁ edit କରିଦେଲ okay no need to like mate ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଲେଖିବାର ଅଛି and all this thing okay तो python mu कभी databricks asset bundle okay so basically there is something called databricks asset bundle जोटा कि एबे recently within 15 days भितर एटा हमर अपडेट आसीची जोटा कि गोटे जेमति हमर पैकेजिंग करिया पे जेमति हमर तमे मे बी सुनिथिबो
जोटा डाटा को पैकेज करके तुम डायरेक्टली डिप्लॉय करूछ ओके सो से जिनसटा एटा एक्चुअली इंस्टॉल databricks पैकेज बंडल locally databricks asset bundles package locally and pip install databricks asset bundle and content resource to test to job.py and import the job okay so they are telling to use this one ठीक अछि I'll just discuss it let me try that and then I'll just get back to you कि ये जिनसटा केमिति हमें implement करिवे okay Okay, we'll move to the next part. जोटा कि हमारा use case रहला. What are the use case you are using? The first thing is like you are using ETL pipelines. The Databricks job can be used for the ETL pipelines and analytics workloads, machine learning pipelines, integration with the external systems, integrating with the tools like dbt and Azure Data Factory. Okay, these are the use cases. Then we have what Spark optimization. So now this is also one kind of questions like theoretical questions mostly asked by the interviewer, like Spark optimization. What are the optimization techniques you should implement for Spark? Okay. So basically Spark optimization is, data frame data sets over RDDs. So these things you need to use. Okay. So mugote jota last time koithili compaction and Z ordering, that is also one kind of optimization technique. Okay, jota mu koithili already jetebale tame you will encounter that kind of small file problem, so you have to always compact the data and you have to apply the Z order on the top of that. Okay, so this is what you have to use. But Spark optimization, so they will ask you what are the optimization concept you have used in Spark. So you can mention like you have to use a data frames or data sets over RDDs. Okay. Okay. So basically you have to use the data frames or data sets over RDDs. I mean, RDD you should not use because it mane optimization perspective, this is not good. Then optimize the data partitioning. Effective partitioning can significantly improve parallelism, reduce the shuffle operations. Technique include using the repartition and coalesce strategically. Okay. So data partitioning ta bhi tamaku properly करिया पड़ो जेमति रिपार्टीशन कोलेस कहथिली तो रिपार्टीशनिंग करूचे इट शुड बी आमे जो नंबर टा दबा दैट शुड बी प्रॉपर माने हमको सेटा माने टिके एनालाइज करिया पड़ो को नंबर टा दबा कोन दबा ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू डिसाइड एमति फिक्स नाही कि किछि हमें 10 टा दे दिले 20 टा दे दिले 100 टा दे दिले इट्स नॉट फिक्स्ड यू हैव टू डिसाइड तम डाटा केते अछि डाटा कॉम्प्लेक्सिटी केते अछि डाटा साइज केते अछि केते फिट हे परि ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कंसीडर then you have to decide ki moro data partitioning ta keteta dabar ଅଛି okay this is called effective partitioning can significantly improve parallelism and reduce the shuffle operation माने हमें effective partitioning जो यूज करछे एटा कोन बेसिकली parallelism हम यूज करछे ना केतेटा हमरो जॉब टा parallelly रन हे परिबो okay so based on that you have to reduce and you have to use it. Then minimize the shuffle operations. Basically, shuffles can be expensive and try to avoid operations that trigger them. Like group by, consider using the alternative approaches like accumulators, broadcasting small tables. Okay. So basically minimize the shuffle operations. Basically हमको shuffle operation टा minimize करिया पड़े. Okay. हम जो data shuffling करूचे, okay. हम जो data shuffling करूचे, से data shuffling टा को आपको minimize हमको करिया को पड़ेगा. Okay. So data shuffling कौन हमरो? So data shuffling तो कहथिली तुमको जेतेबेले हमर जॉइन होची डाटा टा सफल होची across the partitions or across the nodes तो से जो across the nodes हमर डाटा टा exchange होची that you have to reduce. Okay, shuffles is very expensive काना तम जेते shuffles अधिका हबो सेते तमर execution time टा अधिका हबो run time execution time टा अधिका हबो. Okay, so try to avoid the shuffle. Basically हम तो avoid कर परिबानी but we can reduce it. Basically shuffle रो जेमति shuffle को minimize करिया पे we have multiple options. Okay, जेमति मु कहली कि हमकु माने जेमति कोन shuffle has join जेमति यूज करिया अछि instead of sort merge join हमकु कोन कहे shuffle has join हमें कोन मल्टीपल कॉलम ऊपर सर्च करथिले बट जे हम सिंगल कॉलम क्रिएट कर दबा
then we can use it, shuffle hash join. Okay, so that is what we can use. Then built-in functions versus UDF. Basically always it is recommended, जोटा कि UDF रे भी कहथिली, सब बेले ट्राई करिवो built-in function यूज करिया पे, जहां भी हमर अछि ऑलमोस्ट हमर 70-80% जो फंक्शंस गुडा को अछि दैट इज यूजफुल. किछि किछि केसेस रे जोटा कि हमर UDF दरकार, there you can use it, you can implement it and you can mention, but always try to use built-in functions. Okay, then caching and persisting. So basically caching persisting ta मैं तो कहनी, right? रीड करते कोटा सर गोटे डाउट थिला सर कौन ऑप्टिमाइजेशन जो थर्ड पॉइंट था थिला सर सफलिंग हम्म मिनिमाइज सफलिंग ऑपरेशन सर ग्रुप बाय पे माने एबे तो हमें जॉइंट्स पे पढ़िছো जेमती शॉर्ट मर्ज जॉइन गोटे ऑप्टिमाइजेशन देन ग्रुप बाय की और बाकी सब वाइड ट्रांसफॉर्मेशंस पे किछ ऑप्टिमाइजेशन अछि सर नहीं वाइड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप बाय रे जोटा अछि सेटा तमे कोन करिवो फास्ट शॉर्ट गोटे ऑप्शन हमर अछि रिड्यूस बाय की. ओके, जोटा कि हमें यूज करि परिबा, जोटा कि मोस्टली आरडीडी रे ही सपोर्ट करे. ओके, सो आरडीडी तो हमें यूज करि परिबानी, तो ग्रुप बाय रे हमें कोन करिबा, त ग्रुप बाय यूज करूछु ताको सब बेले हमें कोन करिबा कि हमें माने कोन गोटे सॉर्ट करी की ग्रुप बाय करिबा. ओके, सॉर्ट कर देले कोन होबो ना, से फास्ट सॉर्टिंग हे जिवो अक्रॉस द पार्टीशंस एंड तापरे बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू ग्रुप बाय. ओके, तो दैट इज वन ऑप्शन. बेसिकली ग्रुप बाय रे इत्ते प्रॉब्लम्स आसेनी अंटिल देयर इज अ वेरी ह्यूज डेटा सेट, बट जॉइनिंग रे बहुत प्रॉब्लम आसे. ओके, तो तुम जॉइन करूछो इट कॉजेस एन इश्यू बिकॉज तार बहुत सारा डाटा था. ओके, बहुत सारा डाटा सफलिंग रे टाइम लागे. डाटा सफलिंग जतले बढ़ी जाए सेते बेले कोन होय ना, डाटा रो साइज टा बहुत बढ़ी जाए. ओके, मेमोरी कंजम्पशन टा अधिक हो जाए तबले. ता ओके, पे सब अल्टरनेटिव मेथड हमें ब्रॉडकास्टिंग कर परियो सर नहीं एड्रो ब्रॉडकास्टिंग सब बेले तो करि परिबेनी, माने ब्रॉडकास्टिंग टा ओनली फॉर स्मॉल टेबल्स. ओके, ब्रॉडकास्टिंग टा ओनली फॉर द स्मॉल टेबल्स. माने सपोज तमरो गोटे रे 1 लाख रिकॉर्ड्स अछि, जेमति तमे फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल को, फैक्ट डायमेंशन टेबल जानिଛ ना जानना? ना सर ओके, फैक्ट टाइम डायमेंशन टेबल कोन, सपोज तमरो गोटे रिकॉर्ड अछि. ओके, आई विल टेल यू एन एग्जांपल. इसरी टाइप 1 अछि तो आई विल क्रिएट ए नोटबुक. ठीक अछि, तो तमे एठी कोन करलो, spark.sql.types. ठीक अछि, तो तमे एठी कोन करलो कि स्पार्क रो ऑप्टिमाइजेशन. सपोज तमरो गोटे डीएफ अछि दैट इज हैज दिस records. ओके, एटा होची फैक्ट टेबल. ओके, एंड डीएफ 1 अछि जोटा कि हमरो ओके 200 records अछि. এটা হচ্ছে ডিম টেবল. ওকে, ডিমেনশন টেবল. সো বেসিক্যালি এটা এটা তুমি কনসিডর করি পারিবো ট্রানজাকশন ডেটা, ডেইলি ট্রানজাকশন ডেটা. ওকে, ট্রানজাকশনে কোন করছো, তুমি কস্টমার গল গোটে প্রোডক্ট মানে প্রোডক্টটাকে परचेज করলো, অর্ডার করলো, অল দিস থিংস ইউ আর গেটিং. ডিম টেবল সে কোন গলা না প্রোডক্ট ডিটেলস. ওকে, প্রোডক্ট ডিটেলস. ओके, तो प्रोडक्ट तुम गोटे प्रोडक्ट केतेटा थिबो, 100टा 200टा 300टा 500टा मैक्सिमम थिबो ना, ताठू तो अधिक नथिबो. तो प्रोडक्ट जतेटा अछि तुम एतिकिटा, सपोज 200 प्रोडक्ट मोर अवेलेबल अछि, रेकॉर्ड्स अछि एतिकी 1 लाख रेकॉर्ड्स. तमे दे 1 लाख रेकॉर्ड को 200 रेकॉर्ड से जॉइन करिवो, सिंपल जॉइन हे जिवो सिंगल नोड रे पॉसिबल. तो जतल तमे हमर पार्टीशन वाइज जॉइन होउची इन डेटाब्रिक्स इन स्पार्क. ओके, सो 1 लाख टेबल्स तार तमे पार्टीशन हे गला, 200 टा तले पार्टीशन हबो तो केमती हबो सेटा. सो डेफिनेटली से सब रेकॉर्ड्स हबो ना. 200 बाय 8, सपोज 8 नेले हमें 8 केतेरा होची हमरो अराउंड 25 होची. ओके, 25 टा तले गुटे पार्टीशन रे 25 टा रेकॉर्ड हला. सो 1 लाख रेकॉर्ड रे जदि हमें 25 रेकॉर्ड को मैच करिवा,
तो केते लेवल रे हमको सर्च करिया पड़िबो, यू कैन एक्सटेंसिव केते एक्सटेंसिवली हमको सर्च करिया पड़िबो, लाइक गोटे रेकॉर्ड को सब एथरे सर्च करो सब बेसिकली हमें सब जाको जति कि हमर अछि सब पार्टीशन रे हमको सर्च करिया को पड़िबो। ओके सो बेसिकली व्हिच एटा कोन बेसिकली बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन है जो जदि हमें 1 लाख रेकॉर्ड को 200 रेकॉर्ड सहित मैच करियो दिटा डेटा फ्रेम। सो इन दिस केस कोन करबा कि हमें ताको जे ब्रॉडकास्ट कर देबा, ब्रॉडकास्ट माने एटा पार्टीशन हबनी सब जाक माने जति कि हमर पार्टीशन रही गला, माने सपोज हमर 8टा पार्टीशन अछि 1 लाख रेकॉर्ड अछि, सो 8टा पार्टीशन रे सब पार्टीशन रे 200 रेकॉर्ड टा कॉपी हे जिवो, हम एटा पार्टीशन हबनी। ओके तो सेम से केस रे कोन हबो ना 1 लाख रेकॉर्ड टा पार्टीशन 1 रे 1 लाख रेकॉर्ड टा 200 सहित मैचिंग हबो, पार्टीशन 2 रे अगेन आउ किछि रेकॉर्ड टा 1 लाख तो नहे आउ किछि रेकॉर्ड टा 200 रेकॉर्ड सहित मैच हबो, सो दैट 200 रेकॉर्ड इज ऑलवेज सेम, दैट विल नॉट गेट पार्टीशन। ओके सो दैट कोन हबो ना ए जो डीएफ टा डीएफ आसीबो, डीएफ टा को अलगा पार्टीशन रे सर्च करिया को पड़िबोनी, तो सफलिंग टा जीरो एठी ब्रॉडकास्टिंग रे कोन होची ना सफलिंग जीरो, काहे कि जीरो बिकॉज़ 200 टा हमर अक्रॉस ऑल द पार्टीशन कॉपी हे गेला। ब्रॉडकास्ट माने कोन गोटे गोटा समस्त को ब्रॉडकास्ट रे तुमको मिलुची, ब्रॉडकास्टिंग जोटा हम करछु एक्चुअल मीनिंग जोटा, तो सिमिलर टू दैट गोटे 200 रेकॉर्ड टा सब पार्टीशन रे माने सेम डाटा टा डिस्ट्रीब्यूट हे गेला, पार्टीशन न होय कि डिस्ट्रीब्यूट हे गेला, सो दैट सफलिंग दैट इज जीरो हे गेला, राइट। सो दैट इज हाउ वी कैन रिड्यूस। तो एटा बुझी सर हला सफलिंग केमती रिड्यूस हला। स्मॉल टेबल माने केते नंबर साइज को कथा एटा पहुंच सर, स्मॉल टेबल माने एक साइज स्पार्क रो डिफॉल्ट अछि 10 एमबी। ओके सो डिफॉल्ट साइज होछि 10 एमबी रो जोटा कम अछि दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ माने ब्रॉडकास्ट ऑटो ब्रॉडकास्ट अप्लाई हे जिवो 10 एमबी रो जोटा कम अछि। ओके बट सपोज 20 एमबी अछि एंड 2 जीबी डाटा तमरा लोड करछो, तो डेफिनेटली तमे ताको ब्रॉडकास्ट कन्वर्ट करि परिबो। ओके तो टाइनी टेबल जोटा को तुम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जानी परिबो कि मोर केतेटा रिकॉर्ड्स अछि केतेटा टेबल्स अछि। ओके बिकॉज़ रिकॉर्ड सर वाइजली बहुत बट मैटर करे। बाय डिफॉल्ट सॉफ्ट मर्ज जॉइन हुए ना सर डाटाब्रिक्स से, हाँ शॉर्ट मर्जन है। बट जदी 10 MB रेकॉर्ड हैला देन ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट हो जाए सर। ऑटोमेटिकली स्पार्क कॉन्फ़िगरेशन जोटा अछि हमरो ऑटो ब्रॉडकास्ट एनेबल्ड जोटा अछि सेटा हमरो ट्रू हे जिवो, ट्रू अछि एटा ऑलरेडी। ओके बट तार साइज टा अछि ब्रॉडकास्ट थ्रेशोल्ड साइज टा 10 एमबी अछि, बट सपोज हमर 20 एमबी आइला कि 12 एमबी आसी गला, तो से केसेस रे कोन करियो तुम। ओके से केसे तमे तो डेफिनेटली तुमको तो अप्लाई करिया पड़बो ना, माने एटा कर देखो इवन 500 एमबी भी हो 500 एमबी सहित 50 एमबी को तमे यदि जॉइन करिवो डेफिनेटली तमरा किछ गोटे परफॉर्मेंस इशू आसी आसीबो, इट्स यस कॉमन। ओके तो से केसेस रे तुमको ताको ब्रॉडकास्ट थ्रेशोल्ड टा को बढ़ेबो कोन। ओके ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट थ्रेशोल्ड सेट इन स्पार्क देखो। ओके सो बेसिकली कौन आसिला spark.configure set spark.sql auto broadcast join threshold टा एतिकी। ओके 100 एमबी एटा 100 एमबी डाटा, तो मु कहबी कि नै मते 100 एमबी नै यदि 20 एमबी कररा अछि किछि भी कररा अछि आई कैन सेटअप। ओके एटा एतिकी को बाइट रे कन्वर्ट करिकी ताकू मटे दे देबी सो दैट एटा ऑटोमेटिकली सेट हे गेला, देन यू कैन यूज इट। ओके सर हाउ टू ब्रॉडकास्ट सर। ब्रॉडकास्ट टा कहबी आगु को अछि मे भी को अछि। yes okay this is the way you can broadcast df.join broadcast of df2, that's it। okay this is also you can do। so by default eta हे जाउची तमे आइदर कॉन्फ़िगरेशन सेट करि परिबो और एल्स एटा एमती भी करि परिबो, एमती करले तुमको कॉन्फ़िगरेशन सेट करियार नै, इट विल ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट। ओके ब्रॉडकास्ट हे जो सो दैट कोन हो सफल जो क्रिएट होउची सेटा सफलिंग टा होबनी आ कोन जेमती मोटा कहितली तमर एटा होची फैक्ट टेबल गोटे अछि, तमर डायमेंशन टेबल गोटे अछि। ओके फैक्ट टेबल जॉइन करछो, ओके तीनटा सपोज हमर फैक्ट टेबल अछि एंड तीनटा डायमेंशन टेबल अछि। डायमेंशन टेबल सब बेले तमर कम रिकॉर्डिंग थिबो। ओके बिकॉज़ तमर प्रोडक्ट डिटेल्स खाली प्रोडक्ट केतरा थिबो तमर 200 500 मैक्सिमम ना, बट ट्रांजैक्शन तम डेली ट्रांजैक्शन केतरा यूजर प्रोडक्ट स्टोर सब कॉम्बिनेशन थी, तो एथरे कोन हो ना 200 टा सब बेले रिकॉर्ड टा सब रहि जिवो। ओके एथरे 200 एथरे भी 200। ओके
ଏଇଟା ବି 200, ଏଇଟା ବି 200, ଓକେ, ଏଇଟା ବି 200, ଓକେ। ସବୁଥିରେ 200 200 ରେକର୍ଡଟା ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ, ଓକେ, ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଡେଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ନର୍ମାଲ ଡେଟା ତମର, ଯୋଉଟା କି ଏଟା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଡେଟା, ସେଟା କି ଆକ୍ରସ୍ ଅଲ୍ ଦ ପାର୍ଟିସନ ତମର ଡାଟାଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ତମର ସଫଲିଂ ହଉଛି, ବିକଜ ସବୁଥିରେ ସେମ ରେକର୍ଡ ରହିଲା। ସଫଲିଂ କାହିଁକି ହବ? ତମେ ଏଇ ପାର୍ଟିସନ ଟା ତମେ ଜଏନ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ, ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛ ସବୁ ଯାକ ଡେଟାଟା ସେମ ପାର୍ଟିସନ ରେ ରହୁ। ତ ଏଇ ଡାଟାଟା ତମର 200 ସହିତ ଜଏନ ହେଲା, ଏଇ ନୋଡଟା 200 ଜଏନ ହେଲା, ଏଇ ନୋଡଟା 200 ସହିତ ଜଏନ ହେଲା, ତମର ସଫଲିଂ ହେଲାନି। ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ରସ୍ ନୋଡ କୁ ଯୋଉ ପାର୍ଟିସନ ସଫଲିଂ ହୁଏ ସେଟା ହେଲାନି। ତ ତମର ଜଏନ ର ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରଖିବ କି ମୋର ଏଇ ଟାଇପ ର ସିନାରିଓ ଆସୁ, ଅର୍ ଏଲ୍ସ ଏଇ ଟାଇପ ର ସିନାରିଓ ଯଦି ଆସିପାରିବନି ବି, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ ଟିକେ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଓକେ, ସଫଲିଂ ହଉ କି ହାशिंग ହଉ, କିଛି ବି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆଇ ହାଭ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ दैट वन, ସଫଲିଂ ଟାକୁ କେମିତି କଣ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବି। ଓକେ सर जब भी इंटरव्यू पचारला व्हाट आर द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यू यूज देन हमें एग्जांपल डिस्प्ले कॉल ब्रॉडकास्टिंग, करिए सर। ब्रॉडकास्टिंग, हाँ ब्रॉडकास्टिंग तमे कहि परिबो। ब्रॉडकास्टिंग तो मेन ठीक है एग्जांपल ना, कहना जॉइन तमे मोस्टली यूज करियो। ओके, डाटा इंजेक्शन माने तमे जॉइन ही यूज करियो। एंड हाँ, फैक्ट ओके डायमेंशन टेबल टा भी मन रखता, कहना पचार दियंती व्हाट इज द फैक्ट टेबल, व्हाट इज डायमेंशन टेबल, एमती कोन डाटा मॉडलिंग जो करंती। डाटा मॉडलिंग टा कोन एक्चुअली, डाटा मॉडलिंग माने गोटे बेसिक जिनसटा जानी था, डाटा मॉडलिंग टा कोन। ओके, सो डाटा मॉडलिंग माने, सो बेसिकली कोन होची ना, तमरो सब जाक डाटा टा तमरो मेन टेबल रे नथा। ओके, सपोज मेन टेबल रे एटा बुझाउ ट्राई करो। मेन टेबल रे कोन था, सपोज ट्रांजैक्शन मु कहबी। ओके, ट्रांजैक्शन डेटा रे कोन था तमरो, ट्रांजैक्शन आईडी। ओके, ट्रांजैक्शन आईडी थिबो, ओके, देन यूजर आईडी थिबो, कस्टमर आईडी जोटा अछि, कस्टमर आईडी थिबो, तापरे ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी। ओके, तापरे तमरो थिबो अमाउंट थिबो, ओके, क्वांटिटी थिबो, ओके, ऑल दिस थिंग्स थिबो। ठीक है, एटा मेन टेबल रे थिबो। तो तुमको प्रॉपर डाटा मिल गला, ठीक अछि। बट कस्टमर आईडी रे मते दरकार कि कस्टमर नेम भी दरकार, कस्टमर टाइप भी दरकार। तो से डाटा एथि नथिबो ना, कारण सेटा हमर कस्टमर टेबल रे थिबो। बिकॉज़ मु जदी सब जाको इन्फॉर्मेशन मोर ट्रांजैक्शन डेटा रखी देली, सो देयर इज नो मीनिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मु कहबी कि मोर कस्टमर आईडी भी दरकार, कस्टमर नेम भी दरकार, देन हमर कस्टमर आ गोटे टाइप रहा, माने कस्टमर टाइप माने से को टाइप रो कस्टमर, लाइक लॉयल कस्टमर हो कि मोर गोटे प्रीमियम कस्टमर हो कि सब्सक्रिप्शन नहीं थे कस्टमर हो, से टाइप रो कस्टमर। सब जाक जदि मु ए इन्फॉर्मेशन रखी देली, देन मु माने डाटा मोर बहुत ह्यूज हो जिवो ना। जेतिकी मोर दरकार, जेतिकी यूनिक कॉम्बिनेशन अछि, सेतिकी डाटा मोर दरकार, सेतिकी इन्फॉर्मेशन मु रखिबी मोर मेन टेबल रे। ओके, बाकी सब इन्फॉर्मेशन मु डायमेंशन टेबल रे लिखिबी। डिम टेबल गोटे अछि, ओके, डिम टेबल जोटा अछि हमर, डिम टेबल माने हमर गोटे कस्टमर टेबल मु लिखिबी। कस्टमर गोटे डिम टेबल, जोथरे कि मोर कस्टमर आईडी रही गला, कस्टमर नेम रही गला, कस्टमर आईडी हला, नेम रहिला, आ गोटे कोन रही गला कि कस्टमर टाइप। ओके, को टाइप रो कस्टमर से, ओके, प्रीमियम कस्टमर ना नॉर्मल कस्टमर ना कोन कस्टमर, सेटा ठीक अछि। तापर मु कहबी कि डिम टेबल रे प्रोडक्ट रो भी डिटेल्स रखी देबी, प्रोडक्ट रो। ओके, तो सब जक ऐड कर दूची, ठीक अछि। प्रोडक्ट आईडी रही गला, प्रोडक्ट नेम रही गला, प्रोडक्ट कैटेगरी, सब जिंस गुडा। तो ए सब जक जिंस देखो, ए 3 3 6टा कॉलम हेलानी, 6टा कॉलम जदी मु ए जो ट्रांजैक्शन ऐड कर देबी, मो डाटाटा केते कॉम्प्लेक्स हे जिवो, राइट। तो सेति पई ताको डिवाइड करिया पई दे आर क्रिएटिंग मेन टेबल और डायमेंशन टेबल। ओके, सो बेसिकली एटा गोटे टाइप रो कोन कहया कि हमरो दीटा स्कीमा यूज करछु, स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा। तो स्टार स्कीमा माने कोन कि, माने मेन टेबल टा तुम जदी कस्टमर नेम दरकार कि कस्टमर टाइप दरकार, तमे केमति पाइबो, मेन टेबल को डिम टेबल को जॉइन कर दो, यू कैन गेट दिस कस्टमर नेम एंड कस्टमर टाइप, राइट। तो सेति पई तुमको स्टार स्कीमा यूज करबाक पड़िबो। तो स्टार स्कीमा माने कोन कि, माने मेन टेबल टा तुम जदी कस्टमर नेम दरकार कि कस्टमर टाइप दरकार, तमे केमति पाइबो, मेन टेबल को डिम टेबल को जॉइन कर दो, यू कैन गेट दिस कस्टमर नेम एंड कस्टमर टाइप, राइट।
এটা বুঝিলা দিস ইজ Yes, হোয়াট sir. yes কল্ড sir এটা হচ্ছে তোমার স্টার স্কিমা মানে তুমি এই টেবলটাକୁ জয়েন করছো টু গেট দিস কস্টমর নেম অর কস্টমর টাইপ অর এলস তুমি মেন টেবল কু এই যে প্রোডক্ট টেবল কু জয়েন করছো টু গেট দ প্রোডক্ট নেম অর প্রোডক্ট ক্যাटेगरी ओके सबको सपोज तुमको जे कहा है कि मते कैटेगरी वाइज डाटा दरकार सो यू कैन गेट से इनफॉरमेशन तुम कोड पाइबो ए जो प्रोडक्ट इनफॉरमेशन सो यू कैन फाइंड आउट द माने एग्रीगेशन करिया पे भी किछि भी अप्लाई करिया पे यू नीड दैट सो यू कैन गेट इट बट मेन टेबल सब जाक डाटा तुम्हें पाइबनी दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा मॉडलिंग तो डेटा मॉडलिंग रे कोन करिया पड़ो दीज आर देयर विल बी मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स देयर विल बी वन फैक्ट टेबल्स एंड फैक्ट टेबल सब जाक डायमेंशन टेबल सहित कनेक्ट हेकी थिबो ओके माने ता सहित किछि रिलेशन थिबो जेमति मो कहली कस्टमर आईडी अछि डेफिनेटली इट हैज रिलेशनशिप विथ द कस्टमर टेबल मेन टेबल देन एठी प्रोडक्ट आईडी अछि डेफिनेटली एटा प्रोडक्ट आईडी से रिलेशनशिप थिबो ओके सो ए जिंस गुडा को तो तमरो सर थाए एटा को हमने वन टू मेनी रिलेशनशिप कहि परियो सर हाँ वन टू मेनी कहि परिबा एठी गोटे माने वन टू मेनी हाँ मेन वन टू मेनी कहि मेन परिबा टेबल रे मेनी हाँ मेन टेबल रे सर कस्टमर प्रोडक्ट सब जगह फेच होउची हम्म तो हमर मास्टर टेबल ला मेन टेबल रहबो सर यस मास्टर टेबल टा हमर मेन टेबल रहबो किछि भी इंफॉर्मेशन हमको दरकार then we can directly join with this table and we can fetch that information okay so we have सेमिति हमें डाटा को एमती मॉडलिंग देन ई कांसेप्ट को हमें कहबा कि डाटा मॉडलिंग कहना डाटा टा मेन टेबल इज रिलेटेड टू ऑल दिस डिमेंशन टेबल मेन टेबल जदि मो एटा किछि कस्टमर आईडी किछि नथांता तो डेफिनेटली देयर इज नो रिलेशनशिप तो सेमिति यस ले कोन सर हमें डाटा को लूज करबा डाटा भितरे प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन कर परिबानी ओके डिपेंडेंसी जो मेंटेन करंती दैट वी कैन नॉट डू ओके सो सेतिपई ए जो डाटा मॉडलिंग टा होची कि एटा को ईज करिया पे बेसिकली ये जो डाटा मॉडलिंग टा रिलेशनशिप जो अछि फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल विथ जो रिलेशनशिप अछि टू इजियर मेक इट इजियर वी आर यूजिंग डाटा मॉडलिंग एंड एटा होची टू टाइप्स ऑफ स्कीमा अछि जोटा कि हमें गोटे होची स्टार स्कीमा जोटा कि गोटे डायमेंशन गोटे सॉरी गोटे फैक्ट टेबल इज रिलेटेड टू सब जाक डायमेंशन टेबल ओके दैट इज कॉल्ड एज स्टार स्कीमा snowflake schema होची डायमेंशन टेबल भी रिलेटेड टू अनदर डायमेंशन टेबल दैट इज snowflake schema ओके तो एटा कहि दउची स्टार स्कीमा बेसिकली डाटा मॉडलिंग टा होची दी प्रकार गोटे होची स्टार स्कीमा आ गोटे होची snowflake schema ओके स्टार स्कीमा रे कोन होची वन फैक्ट टेबल इज डिपेंडेंट विथ ऑल डिम टेबल ओके ओके एथरे कोन होची ना सेटा सेम डिम टेबल is also dependent with other dim table that is what we call as a snowflake schema okay ए दिरा जिंस खाली बेसिक जिंस मन रखता ओके एते भी एटा डाटा मॉडलिंग रे भी तुम एते भी क्वेश्चंस पाइबोनी मोस्टली जहां भी पाइबो बेस्ड ऑन द क्वेरी तुमको से गोटे सिनारियो देबे यू हैव टू क्वेरी जॉइनिंग करी एटा करिया पड़ो जोटा कि तुम जानचो बेटर ओके एसक्यूएल रे ओके एंड ये क्वेश्चंस गुडा को जस्ट फॉर बेसिक्स इन द थियोरेटिकल पचारंती हैव यू एवर वर्कड ऑन डेटा मॉडलिंग व्हाट इज डेटा मॉडलिंग तुम एटा कहि देबो कि डेटा मॉडलिंग इज टू टाइप्स सो वन हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल ओके एंड जेतेबेले फैक्ट टेबल डायमेंशन टेबल कहिबो सबल ट्राई करो गोटे गोटे माने इट शुड बी सब्सटेंशियल ओके आई मीन सो गोटे टाइप रो एग्जांपल तमे देबो ट्रांजैक्शन जेमति मु एटा एग्जांपल दिले ट्रांजैक्शन कस्टमर हे गला एटा गोटे ओके एडमिशन डिटेल्स ए सब जिंस गुडा तमे दबो ओके so that example dele anyone can easily understand se janibo ki you have worked so example ta de debo so that you can properly answer okay तो এটা হচ্ছে ডাটা মডেলিং র কনসেপ্ট ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ yes sir ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲ ତ ଏଟା ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥ ହେଲା ଏଟା ତମେ ନୋଟ ଡାଉନ କରିଥାଅ ଯୋଉଠି ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ क्वेश्चंस ମୁଁ କହୁଛି ଏଟା ସବୁ ନୋଟ ଡାଉନ କରିଥାଅ କାରଣ ଏଟା ସବୁ ପଚାରନ୍ତି क्वेश्चंस एंड एटा क्वेरी तो मस्ट आसीबो नो डाउट या ऊपर एसक्यूएल क्वेरी मस्ट गोटे गोटे सिनेरियो दे देबे हाउ कैन यू फाइंड आउट द माने मैक्सिमम गो माने गोटा लॉयल कस्टमर की अछंती कि मोस्ट यूज प्रोडक्ट कोटा ऑल दिस थिंग्स सेटा तमे पचारिबे सेटा होची बेसिक
बट ए जिंस गुडा थियोरेटिकल टिके पचारंती एंड हाँ एटा जो कहले एटा होची हमर ब्रॉडकास्टिंग पे यूज करछो जोटा कि डेटाटा इम्बैलेंस अछि एठी 1 लाख record is getting merged getting joined with the 200 record सेटा पे हमर कोन होची ना एठी डेटाटा हमर जो अछि सेटा कंप्लीट इम्बैलेंस डेटा अछि तो इम्बैलेंस डेटा रे ही आमे कोन करछो तो बिग डेटा सेट को गोटे स्मॉल डेटा सहित जॉइन करछे यू हैव टू ब्रॉडकास्ट ओके यू हैव टू ब्रॉडकास्ट नॉर्मली हेटा प्रॉब्लम्स आसे तो एटा कोन जस्ट मु लिखि दउचे एठी df डॉट जॉइन जेमति करछे ब्रॉडकास्ट ओके ठीक अछि इनर जॉइन करियो फाइन ओके ब्रॉडकास्टिंग जॉइन हम करछे ओके आई थिंक आउ दिसटा किछि मिसिंग हे गेला हां लेवरेजिंग एडाप्टिव क्वेरी एग्जीक्यूशन सो बेसिकली हमर स्पार्क रो अपडेटेड वर्जन रे कोन होची ना एडाप्टिव क्वेरी एग्जीक्यूशन सर अछि कैसे एंड परसिस्टेंट अच्छा कैश पर सिस्टम कहली ना कैच एंड परसिस्ट सो बेसिकली हमें कोन करछे ना df डॉट कैश कर दोछे ओके सेमती हेले कोन होची ना एमती करले से कोन करछे ना ऑटोमेटिकली डेटा फ्रेम टा हमर माने मेमोरी रे स्टोर हो जाउची हमर जो कैश मेमोरी ओके सो दैट कोन होची ना सेम जिंस हमें सपोज जदी गोटे कोन करछे फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू हमें कोन करछे स्पार्क डॉट रीड एग्जांपल दोची मो एता कोडिंग एते लेखुनी यू नो द कोडिंग वेल सो बेसिकली हमर कोन होचे एम्प्लॉय हे गेला ठीक अछि एम्प्लॉय हे गेला तो सपोज जेमती हमर स्पार्क रो कॉन्फ़िगर जेमती स्पार्क रो आर्किटेक्चर कोन कहूची जे पर्यंत हमें गोटे एक्शन कॉल करने से पर्यंत कोन हबो सेम जिंसटा इजीली रिपीटेड हबो माने रिपीट हबो सब बेले तो मु कोन करबी कि आ ऊपर df डॉट फिल्टर करबी df डॉट हमर ग्रुप बाय करली ओके ग्रुप बाय कली राइट कली जहाँ भी कली तो एवरी टाइम जेते बळे भी मु एई तीनटा चारटा जहाँ भी कॉल करिवि सब बेले से कोन स्पार्क डॉट रीड डॉट टेबल को जिवो डाटा को आनिबो फिल्टर करिवो ओके देन पुणी जिवो एग्जीक्यूट करिवो तो गोटे डेटा फ्रेम ऊपर मु मल्टीपल जेते थर ऑपरेशन करूची से सेते थर कोन जिवो डाटा को रीड करिवो एंड ट्राई करिवो ओके मे बी से टास्क को स्किप कर दोची दैट इज फाइन जोटा कि ऑलरेडी एग्जीक्यूट हे जाची से ताको स्किप कर दबो एटा जॉइन रे हुए सेटा हबो बट द थिंग इज सब जाके रीड ही करिवो बिकॉज़ एटा एक्शन जेतु होची ओके तो जदि मु ताको कैश कर दोची सी आ एठी ए स्टेप को आ जीवनी से डायरेक्टली डाटा को कैश कर देला सेम जिंस फिल्टर कला सेम जिंस ग्रुप बाय कला सेम जिंस जॉइन करके फाइनली राइट कर देला ओके व्हिच इज द बेटर मेथड जोटा कि हमें मेमोरी रे कैश कर दोचे हमको जाई कि पूर्ण थरे डाटा को रीड करिया को पडुनी ओके दैट इज अ कैश एंड परसिस्ट इज वी आर यूजिंग यदि गोटे डाटा फ्रेम मल्टीपल टाइम्स हमें यूज करछे फॉर जॉइनिंग फिल्टरिंग एंड ऑल दिस थिंग देन यू हैव टू कैश इट और एल्स यू कैन persist it ओके सर डिफरेंस टा कोन सर ओके कैश और प्रोसेस्ड रो ओके जस्ट a second ओके सो हां कहला कोन को सर डिफरेंस टा कोन सर कैश और प्रोसेस्ड मध्ये रे सर कैश और persist ଭିତରେ डिफरेंस होची गोटे लेवल रे ऑप्शंस अछि एठी ओके तो persist भिତରେ कोन हबो ना हमें देखो कैश माने कोन हम कहितली कि सेटा मेमोरी को स्टोर करछि मेमोरी माने रैम ओके तो रैम को जेतोले स्टोर करूछु सेतोले कोन होची ना कैश रो ओनली वन ऑप्शन कि सबले से मेमोरी रे स्टोर हबो ओके स्टोर टू मेमोरी गोटे ऑप्शन अछि बट persist रे कोन होची ना वी हैव मल्टीपल ऑप्शन माने सपोज आज मो डाटा बहुत हे गला सपोज मु डाटा फ्रेम टा क्रिएट करछि मोर बहुत हे गला एंड से डाटा फ्रेम टा मोर कैश रे स्टोर ही होनी माने माने कोन हला ओवरफ्लो हो जाउची तो से केस रे कोन मोर तो प्रोसेस टा फेल हे जिवो ना तो से केसेस रे persist रे ऑप्शन रहउची कि हमें जदी किछि भी ओवरफ्लो मेमोरी रहउची ताको हमें डिस्क रे स्टोर कर परिबा
ଯେତିକି କ୍ୟାଶ ରେ ମାନେ RAM ରେ ଷ୍ଟୋର କରିବା କଥା କରିବା ଯଦି କିଛି ଓଭରଫ୍ଲୋ ମେମୋରି ଆସୁଛି ଦେନ୍ वी कैन स्टोर इट टू द ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ହେଇଗଲା ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ହଉ କୋଉଠି ହଉ ତମେ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବ ଓକେ ओनली डिस्क ओनली मेमोरी ओनली सीरियलाइज ऑल दिस ऑप्शंस आर अवेलेबल जोटा कि कैश रे किसी ऑप्शन ही नहीं ओनली डिफरेंस बट दीटा को सेम काम करे दीटा को सेम काम करे ओनली द माने कोन जार फंक्शनलिटी ऊपर एटा डिफरेंस आछी ओके फंक्शनलिटी ऊपर डिफरेंस आछी देखो मैं यदि असिस्टेंट मार देबी से सेम जिंस आसीबो ओके persist versus ओके सो बेसिकली कौन होछ देखो कैश रे ओनली कैश रे देखो एठी कौन लिखिला कैश रे स्टोर्स द डेटा फ्रेम ओनली मेमोरी आउ तार किछि ऑप्शंस नहीं बट एथिरे कोन होछ ना हमें मेमोरी आउ डिस्क लेवल रे भी स्टोर करि परिबा स्टोरेज लेवल मेमोरी एंड डिस्क स्टोरेज लेवल डिस्क ओनली ऑल दिस ऑप्शंस वी कैन सेट काहे कि ना आमे जाना डाटा केतेबेले बढ़ी जीवो केतेबेले कमी जीवो ना आमे जदी सबबेले सेट कर देबा कि कैश रे स्टोर हो आज जदी डाटा अधिक हो गेला ओवरफ्लो हो गेला एटी फेल हे जे प्रोसेस टा आउट ऑफ मेमोरी इश्यू आसीयो गोटे ओके सो आउट ऑफ मेमोरी को हमें हैंडल केमती करबा वी हैव टू परसिस्ट कर दो परसिस्ट करिकि हमें कोन करबा कि मेमोरी एंड डिस्क ए सेट लेवल टा सेट कर दवा सी को करबो फर्स्ट मेमोरी स्टोर करबो जदी किछि ओवरफ्लो हो गेला दैट विल बी स्टोर्ड इन द डिस्क ओके इट विल नॉट फेल बट एथरे कोन होछि ना जदी अधिक हो गेला डाटा फेल हे ओके बट दीटा कर काम सेम but only thing is options ये जो options हमार अच्छी we have the options we have the privilege to store the overflow data in disk that is what the difference ସେଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ସେ df.disk only read कला परे डाटा रीड कला परे ताको एटा अप्लाई कर दो एटा रीड करछो ना एटा yes रीड sir कलो हां df रीड कलो एटा को तापरे अप्लाई कर दो df.persist okay खाली yes ओके got it ओके तापरे तमे ताको फिल्टर करछो ग्रुप बाय करो जॉइन करो जहां भी करो डजंट मैटर सर सर जिंदी ब्रॉडकास्ट जॉइन को से ऑटोमेटिकली से कुछ ब्रॉडकास्ट करछि से जदी इफ इट इज लेस देन 10 MB किंबा हमें स्पार्क कॉन्फ़िग पे जाके किछि भी ताको थ्रेशोल्ड गोटे सेट कर दबो तो बट सेमदी ही कैच और परसिस्टेंस भी से कोन बाय डिफॉल्ट कोन करथा होछि कि सर ना ना लाइक ना बाय डिफॉल्ट करूनी सेटा सेटा तार तुमको कैश परसिस्ट करिया पड़ो मैनेज करिया पड़बो एज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हां जदि तमरो थरे यूज होची देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ कैश एंड परसिस्ट ओके जदि तमरो मल्टीपल टाइम्स यूज माने डीएफ यूज होची यदि मल्टीपल टाइम्स तमे सेटा को यूज करछो देन यू हैव टू यूज कैश एटा की बेस्ट ऑप्शन थरे तमे यूज करछो फिल्टर ताको आ गोटे आउट डाटा फ्रेम स्टोर करिकि ताको रखुछो देन देयर इज नो यूज बट सेम डाटा फ्रेम जे सपोज जॉइन करछो गोटे डाटा फ्रेम ता सब बेले कॉमन यूज होची सब जाको जॉइन रे देन तमे कैश एंड परसिस्ट करिबा इट्स द माने मैंडेटरी जोटा की कहय गले ओके ओके सर गॉट इट समस्त बुझी पारलो कैश एंड परसिस्ट बिकॉज कैश एंड परसिस्ट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके कहीं कि ना कैश रे हमें बहुत सारा जिंस हमें यूज करछु बहुत सारा जिंस हमर रहुची भी एंड यू कैन यूज दैट एंड कैश भी जति की होची माने जति की हमर यूज होची एटा मोस्टली यूज्ड ओके सर हमको जेतलो कैशे मेमोरी फुल है जो हमको ओओएम एरर आसी अछि करेक्ट तो करेक्ट सेतले ओएम हम परसिस्ट को मूव ऑन करियो मूव ऑन करि पे ओके सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि परसिस्ट यूज करो ओके परसिस्ट यूज करी कि स्टोरेज लेवल मेमोरी एंड डिस्क दैट्स इट ओके दिस शुड बी द बेस्ट ऑप्शन वी कैन से जोटा कि सब प्रकार केस को से हैंडल करियो आमे जदी खाली कैश यूज आमे जाने ना हमर ओवरफ्लो आमे फिक्स जदी आमे जे जानिते कि ना हमर मोर देन 1 जीबी रो डाटा आसीबनी देन वी आर गुड टू यूज कैश यदि आमे जदी भाबिबा कि नै प्रोजेक्ट रे हमर अधिक डाटा ओवरफ्लो डाटा हमर एक्सपेक्ट करिबा then you should not use this you should always use persist okay so this is the main thing to avoid redundant computation એટલે କିଛି ନା to avoid redundant computation तो एटा यदि मेमोरी रे हमर गोटे डाटा फ्रेम टा जो आउटपुट अछि हम तो मेमोरी रे स्टोर कर देले हम तो कंप्यूटेशन आउथरे करिबानी ओके सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस देन लेवरेज एडाप्टिव क्वेरी एग्जीक्यूशन जोटा कि एक गोटे एनेबल कर देले से ऑटोमेटिकली जहां भी क्वेरी हमें रन करछे से ऑटोमेटिकली ताकू से स्पीड अप कर दबो okay basically कौन कहते हैं dynamically adjust the execution plan based on the runtime statistics for optimized query execution
सो बेसिकली एटा हमर यूज होउची कि क्वेरी जो एग्जीक्यूशन प्लान हमें क्रिएट होउची ताकू ऑप्टिमाइज करिया पे ओके ए क्यूटा एनेबल जोटा कि हमर डिफॉल्ट हे जाईची जोटा कि तमे माने स्पार्क रो जो लेटेस्ट वर्जन जदी यूज करिवो ओके that will be automatically implemented adaptive query enabled true okay then broadcasting the small data for joins with small data set broadcasting smaller table can reduce the shuffle operations optimize the serialization choose efficient serialization formats like cairo instead of java serialization minimize the overhead so basically serialization जो हमें यूज करछु जते बेले हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करछु सेटा हमर सीरियलाइज होची डाटाटा फर्स्ट सो को टाइप रो डिफॉल्ट सीरियलाइजेशन गोटे यूज होची जावा से ने यूज होची बट हमें जदी काइरो सीरियलाइजेशन यूज करबा देन वी कैन इम्प्लीमेंट माने कि परफॉर्मेंस टिके बेटर होबो ओके सो दीज आर द थिंग्स लाइक तुमको जो प्रोजेक्ट लेवल यूज करियो बिकॉज़ या पई प्रॉपर्ली तुमको अलगा फॉर्मेट दरकार अलगा टाइप रो डाटा इंजन दरकार ऑल दिस थिंग्स सो यू कैन रिमेंबर दिस हम एटा करेंटली इंप्लीमेंट कर परियानी एडजस्ट टास्क पैरेललिज्म बेसिकली हां केतेटा पैरेलल तब चाहू कि मोर केतेटा टास्क पैरेलली रन होबा पई ओके दैट आल्सो यू कैन सेट अप देन मिनिमाइज द गार्बेज कलेक्शन तो गार्बेज कलेक्शन मु कहतिली कि व्हेनेवर तमरो डाटा रो माने नोड रो साइज टा बहुत अछि ओके यू हैव ए नोड रो साइज टा सपोज तमरो 8 जीबी अछि ओके बट तमरो डाटा टा ओनली प्रोसेस होछि 1 जीबी ईच माने ये रे ओके तो से केसेस रे कोन करिवो ना तमे तमे सेटा गार्बेज कलेक्शन ने पळेबो माने अननेसेसरी आउ जो 7 जीबी रहिला सेटा अननेसेसरी माने सेटा वैकेंट पड़ला ओके सो दैट इज व्हाट एटा तमर एते परफॉर्मेंस माने एते भलो हबोनी हम भाबुता कोन हां 8 जीबी अछि 1 जीबी प्रोसेस हैला तो डेफिनेटली मोर बहुत फास्ट हेजो डाटा नो इट इज नॉट लाइक दैट डाटा सेतेले परफॉर्मेंस भलो हबोनी जेतु परफॉर्म जेतु गार्बेज कलेक्शन रोछ तमर सेति पई अननेसेसरी डाटाटा सेते स्पीड अप हेई परिबोनी प्रोसेसिंग भी जति टाइम लागिवो अलगा प्रोसेस रे सिंगल नोड रे सेति एति माने एथरे भी सेति टाइम लागिवो ओके so it will not get processed सेति पई तुमको एटा मैनेज करिया पड़िबो either you can reduce the number of parallelism or you can reduce the number of माने वर्कर नोड्स all these things सेति पई को हमें सबले माने जते बेले गोटे किछि क्लस्टर टा क्रिएट करिबा इट्स अ क्लस्टर माने कोन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर नोड्स ड्राइवर नोड्स सो वर्कर नोड जते बेले नबा ईच वर्कर नोड टा साइज टा को हमकु ऑप्टिमली नबा पड़िबो इट कैन नॉट बी वेरी स्मॉल इट कैन नॉट बी वेरी ह्यूज गोटे मीडियम साइज जेमति हमें कहले कि 4 जीबी डाटा 5 जीबी डाटा रैम टा ईच वर्कर नोड इज द बेस्ट ऑप्शन टू टेक सो दैट हमर डाटा टा प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हे जिवो एंड डाटा टा प्रॉपर्ली स्मूथली हमर प्रोसेस होबो पर अधिक नै गेले हमर गार्बेज कलेक्शन प्रॉब्लम अछि कम नै गेले you know that data कम नै गेले हमर ओवरफ्लो जेंति आउट ऑफ मेमोरी इश्यू आसीबो ओके सो दिस काइंड ऑफ इश्यू कैन occur then हमर enable predicate push down so से सबले कहै छी enable predicate push down माने filter the data close to the source as soon as possible तो से कहै छी जत्ते बळे भी तमे डाटा टा रीड करूछो ओके सबल ट्राई कर फर्स्ट फिल्टर करिया पे फिल्टर करी कि ता ऊपर एग्रीगेशन अप्लाई करो जॉइन अप्लाई कर जहां भी अप्लाई कर बट हमें मोस्टली कोन करू नै हमें फास्ट रू फिल्टर अप्लाई कर दो माने सॉरी जॉइन पर फिल्टर अप्लाई करू जोटा कि हां जते बळे दरकार यू कैन यूज दैट बट व्हेनेवर इट इज नॉट नीडेड सो सबल ट्राई करे कि मैं तो डाटा को रीड करूची विथ दैट मु सबले ताको फिल्टर कर देबी सो दैट आई डोंट हैव टू डू द कंप्यूटेशन विथ अननेसेसरी डाटा बुझला तो सेति पे एनेबल प्रेडिकेट पुश डाउन देन ऑप्टिमाइज द स्टोरेज फॉर्मेट ऑलवेज सबले चूज करे कि डेल्टा फॉर्मेट और पार्के फाइल फॉर्मेट ओके डेल्टा फॉर्मेट चूज करले डाटा तमरो प्रॉपर्ली स्टोर होबो एंड प्रॉपर्ली तमे ताको डाटा को फेच करि परिबो ठीक अछि सो दीज आर द ऑप्शंस you have to know then ame kali पढ़िबा mostly spilling data okay sorting पढ़िबा okay then ame spark रो memory management केमति होचे कोन होचे we'll discuss ठीक अछि ये सब ऑप्टिमाइजेशन हमरो स्पार्क कॉन्फ़िगरेशन रे मिल जिवो हाँ हाँ स्पार्क कॉन्फ़िगरेशन रे मिल जिवो देखिबी मु माने जदी किछि लिंक हबो आई विल शेयर यू और तमे भी गूगल करि परिबो ए सब जिंस गुडाको ओके तुमको इजीली मिल जिवो स्पार्क कॉन्फ़िगरेशन एंड एटा किछि माने किछि मेमोराइज करियार किछि दरकार नै तुम जस्ट कांसेप्ट टा बुझिता जेतोल दरकार यू कैन यूज द एआई ओके एटा किछि माने ताको मन रखिया दरकार नै ओटा सब बट कांसेप्ट गुडा को मन रखता सब ब्रॉडकास्टिंग कोन केमती कॉन्फ़िगरेशन जो कोड टा एते मन रखिया दरकार नै यू कैन गूगल एवरी टाइम तो इंटरव्यू रे हमें जतो कहबो
ମାନେ ଅପ୍ଟିମାଇଜ ସିରିଆଲାଇଜେସନ ତ ତାଙ୍କେ ପଚାରିବେନି କୋଡ୍ କିଛି ଲେଖିବେ ଯଦି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତମେ ଖାଲି କହିବେ କି you can set up using spark conf set, okay, that's it. spark dot configuration set ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ, okay, you can set up like that. କଣ କେମିତି you can tell that କି I don't remember, actually I don't remember the exact syntax, but we can do it by using this, okay. Mostly ଏବେ ତ mostly interviewer କହୁଛନ୍ତି କି they then just tell me the approach, or else you can use the ମାନେ ତମର ତ AI ଅଛି, you can use that one, chat GPT ଅଛି, ଏ ଅଛି, ଖାଲି କୋଡ୍ ଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦବ, but ମାନେ ଦରକାର କଣ କି କଣଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ତମେ ଯଦି କନସେପ୍ଟ ଜାଣି ନଥିବ ତମେ କଣଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ କେମିତି ଜାଣିବ? ଓକେ, କପି କରିବାର ଗୋଟେ ୱେ ଥାଏ, ଓକେ, ୟୁ ସୁଡ୍ ନୋ କି କଣଟା ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ୟୁ ସୁଡ୍ ଟେଲ୍ ଦେମ୍। ଯିଏ ଅଧିକା ପଚାରିଲେ ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ କେସେସ୍ ଯୋଉଟା କି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 1000 ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସେ କି ଲାଇକ୍ ହଁ ଜଣେ ଜଣେ ପଚାରନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଣ ୟୁଜ କରୁଛ କଣ କରୁଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇଗ୍ନୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଓକେ, ବିକଜ ସବୁ ତ ତମେ କରିପାରିବ ନା। ତ ବେସିକାଲି ତମେ ଆପ୍ରୋଚ ମନେ ରଖ, ଆପ୍ରୋଚ ମନେ ରଖ କି ହଁ ପାର୍ଟିସନିଂ ଅପ୍ଟିମାଇଜ ପାର୍ଟିସନିଂ ଟା କଣ ମୋର ମନେ ରଖିବା, ମାନେ କନସେପ୍ଟ ଟା ମନେ ଅଛି, ଏଟା ସଫଲ ଅପରେସନ ଟା କଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଓକେ। ତାପରେ ତମେ କଣ କର, ସଫଲ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର 200 ଟାକୁ ଅଧିକ କରିପାର, ଯୋଉ ସଫଲ ପାର୍ଟିସନ ର ସାଇଜ ଟାକୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇନକ୍ରିଜ। ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଫଙ୍କସନ କଣ, ୟୁଡିଏଫ୍ ଫଙ୍କସନ କଣ, କ୍ୟାଶ କଣ, ପରସିଷ୍ଟ କଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କନସେପ୍ଟୁଆଲି ମନେ ରଖିଥାଅ, ଓକେ। ଏଟା ସବୁ ମାନେ କୋଡ ୱାଇଜ ତମକୁ ଆଗ ଘୋଷିବାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କନସେପ୍ଟ ଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କୋଡ ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛ ସେଇଟା, এই ଯୋଉ କନଫିଗୁରେସନ ଗୁଡା କହିଲେ କନଫିଗୁରେସନ ଟୋଟାଲି ମନେ ରଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଓକେ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ନିଡେଡ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି। ମେ ବି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ୱେରେ ପଚାରିବେ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସ୍ କରିଛ, ଓକେ, ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଇଦର ପିକ୍ 2 or 3 ଫ୍ରମ ହିୟର ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ଦେମ୍, ଓକେ, ସେଟା ତମେ କହିପାରିବ। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ୟୁ ହାଭ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ୟୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ୟୁ, ओके। तो बेसिकली तुम गोटे स्टोरी बिल्डिंग टाइप रो करिया पड़े कि यस मु ए प्रॉब्लम फेस करथिली, आउट ऑफ मेमोरी करथिली, देन रिपार्टीशन कली मोर हे गला कि मु माने मोर डाटाटा बहुत समय लागुथिला जॉइन कला बेले, एंड मोर मु ताको माने आइदर रिपार्टीशन कर दबो कि रिपार्टीशन बाय रेंज कर दलो कि मु कहल नाही मु ब्रॉडकास्टिंग कर देली, दिस थिंग्स आल्सो यू कैन मेंशन, ओके। ठीक अछि, हमें देखिबा काली हो, ओके। देखिबा हमें नेक्स्ट टॉप टॉपिक्स अछि, हमें यूनिटी कैटलॉग तो मोस्टली काली तो हबनी, नेक्स्ट वीक स्टार्ट करिबा, आउ किछि किछि जिंस अछि हमें कनेक्ट केमती करिबा, ओके, माने डाटा टाको केमती फेच करिबा, सपोज एजर डेटाब्रिक्स अछि कि सॉरी एजर डेटा लेक स्टोरेज अछि, ताको हमें केमती कनेक्ट करिबा, कोन प्रकार कॉन्फ़िगरेशन हमको, ओके, से जिंस डिसाइड करिबा। एंड यूनिटी कैटलॉग जोटा कि एबे समस्त यूज करूचंती डेटाब्रिक्स रे, एंड रिक्वायरमेंट भी बहुत आसी कि यू शुड नो द यूनिटी कैटलॉग, ओके, सेटा भी आई विल टेल यू, ओके। तो ऑलरेडी कैटलॉग यूज करछो, बट तार यूज एक्चुअली कोन, हमें कोन टेबल देखुचे ये करछे से करछे, बट तार एक्चुअली यूज कोन आई विल डिस्कस दैट। यूनिटी कैटलॉग गोटे बिग कांसेप्ट एक्चुअली, आई विल टेक, ठीक अछि, सो वी आर गुड राइट, यस सर। ओके ओके, ठीक अछि, विल सी टुमारो, ओके।